So we'll see. Today we are going to see another chapter known as a drug used in the angina pectoris. So before that, I would like to revise you anti-hypertensive drug and their important adverse effect, because as I told you in the last session, I'm going to make a one more slide, and I will take your drug mechanism of action and their adverse effect in a short, so that you will remember. So we have already seen anti-hypertensive drugs. So drug used in the treatment of hypertension. Basically, there are different kind of drugs used in the treatment of hypertension. There are different kind of drugs. So we have seen that centrally acting drug. In the centrally acting drug, you have different classes. So those drugs which are known as a pre-synaptic alpha 2 blockers, clonidine, methyl dopa. Few drugs they are known as catecholamine depleters. Example, reserpine. Some drugs they will block the your ganglia, hexamethonium, trimethophan. Some drug will block the adrenergic neuron like guanethidine, okay, guanethidine and depresoquine, guanethidine, bretylium tosylate. So these drugs, okay. After that, some drugs they will block the alpha and beta receptor. Alpha blockers, in that also non-selective, selective. Beta blockers, selective, non-selective. Beta blockers with additional sympathomimetic activity. Beta blockers with alpha blocking activity, etc. etc. Beta blockers with the vasodilator property. We have seen that class. After that, we have also seen drug acting on RAS, renin-angiotensin-aldosterone system. So, renin antagonist, ACE inhibitor, ACE inhibitor, that is angiotensin converting enzyme inhibitors. After that, angiotensin receptor blockers. After that, aldosterone antagonist. Now, next, again vasodilator. We have seen arteriolar dilator, venodilator, arteriolar plus venodilator. After that, diuretics. So these are the major few headings under which anti-hypertensive drugs are covered. एंटी-हाइपरटेंसिव ड्रग के इतने सारे क्लास है ना. डायरेटिक क्लास है आपका, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल ड्रग सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक, वो एक क्लास है आपका. अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, वो एक क्लास है आपका, है ना. उसके बाद में ड्रग एक्टिंग ऑन रास, है ना, वो एक क्लास है. देखा है ना अपन ने एक सब क्लास, इस और नो. So anti-hypertensive drugs collectively their adverse effect. So here I have listed class, mechanism of action of those particular drugs, and adverse effects. So say for example first class is a diuretics. Diuretics मतलब क्या करेंगे? They will decrease the blood volume, they will increase the diuresis, they will increase the urine formation, they will excrete sodium and water from your body. So ultimately they will decrease the blood volume, they will decrease the blood volume, and also decreases the sodium level from your body. That is the main mechanism of action for anti-hypertensive effect. Now in that you have different kind of diuretics, thiazide diuretics, then potassium sparing diuretic, loop diuretics, osmotic diuretics, etc. etc. So particularly for anti-hypertensive effect, thiazide diuretics, they are the first line agent. They are the first line agent used in the hypertension. So what are adverse effects of these thiazides? So principally they will produce hypokalemia. Hypokalemia मतलब क्या? Decrease in the level of potassium. तो ये पोटेशियम का लेवल कम करेंगे. Okay? Hyperglycemia, they have dysglycemic event. They will increase the blood sugar level by inhibiting the release of insulin. So hyperglycemia, then hyperuricemia. तो यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन होता है वो कम कर देंगे. They will decrease the excretion of uric acid and they will increase the reabsorption of uric acid from the tubules. So that's why hyperuricemia. So obviously अगर कोई ड्रग अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है तो वो जो गाउट होता है, जो आर्थराइटिस होता है, उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा. जो ड्रग अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, सो तो वो ड्रग किसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा उसका? सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ डायबिटीज mellitus. Okay, so thiazides they are contraindicated in case of diabetes. Also, they are contraindicated in case of your gout patient. Okay, so out of that, indapamide is also one of the thiazide diuretics, and it is the more potent than your other thiazides like hydrochlorothiazide. Then loop diuretic के क्या adverse effect होंगे? Loop diuretics, they are also known as a high ceiling diuretics. They are also known as a high ceiling diuretics, loop diuretics. In that you are going to have your furosemide, bumetanide, torsemide, then ethacronic acid, and etc. etc. Okay, so what are the adverse effects of these loop diuretics? Loop diuretics, they are also known as a high efficacy diuretics, means they will increase more urine formation. The urine formation के लिए मैंने आपको पहले फार्मूला बोला था,
कि वाटर और सोडियम के बीच में क्या चल रहा है, लव अफेयर चल रहा है। तो सोडियम के बिना वाटर जी नहीं सकता, वाटर के बिना सोडियम जी नहीं सकता। अगर सोडियम बॉडी के अंदर रीएब्सॉर्ब होगा तो वाटर भी एब्सॉर्प्शन होगा, और सोडियम का एक्सक्रीशन होगा तो वाटर का भी एक्सक्रीशन होगा, क्योंकि वो एक दो दूसरे के बिना जी नहीं सकते, राइट। सो दैट्स व्हाई दे विल excrete huge amount of sodium from your body, they will excrete huge amount of potassium from your body, calcium from your body, right. So that's why they will produce hypokalemia. Okay, hypokalemia means decreased potassium level. Hyponatremia means decreased sodium level. Hypocalcemia means decreased calcium level. So they will cause severe electrolyte disturbances. Okay, and they will also damage eighth cranial nerve. तो एट cranial nerve को भी डैमेज करता है ये diuretics, and all they will produce deepness. They will produce a deepness. So particularly your furosemide, right, ethactonic acid, etc., etc. Okay, then they also produce the hyperuricemia. They will increase the uric acid in the blood. So they are also contraindicated in case of your gout. Except this indacrinone. Indacrinone is another loop diuretic, but it will not cause uricemia. It will not cause hyperuricemia. So it is used in the patient with the gout. So which loop diuretic is used in the patient with the gout? So this indacrinone. Okay. So we are going to see this diuretics in the detail when we'll see diuretics chapter. Okay. So next again आता है आपका potassium sparing diuretic. So potassium sparing means what? They will spare a potassium. They will not let the potassium to be excreted. So that's why potassium sparing diuretics. So okay. So they are useful when hypokalemia is undesired. Okay. So they are combined with the beta blockers. Beta blockers भी क्या करते हैं, hyperkalemia करते हैं. That's why. So they will cause no hypokalemia by potassium sparing diuretic. So these are the adverse effect of your diuretics. So second आपका class होता है central agonist, central alpha 2 agonist. So in that you are going to have two drug, clonidine and methyl dopa, right. So what will these drug do? They will decrease the sympathetic outflow. They will decrease the sympathetic outflow. That is nothing but they will decrease the sympathetic outflow. So you know that central alpha 2 receptor, centrally alpha 2 receptor, they are present on the presynaptic neuron. So they controls the release of catecholamines. They will decrease the release of catecholamines. Okay. So either central alpha 2 agonist or central beta 1 agonist. Central beta receptor is also involved in the control of catecholamines. So central beta 1 agonist. So they will decrease the sympathetic outflow. So in that, these are the drugs. So clonidine. What are the adverse effect of clonidine? So clonidine का adverse effect क्या होता है? So as it is a central drug, so it will cause sedation. ये sedation करता है, नींद लाएगा. Then rebound hypertension if this clonidine is stopped suddenly. अगर आपको clonidine का ट्रीटमेंट चालू है और अचानक उसका स्टॉप किया, so due to sudden stoppage of clonidine, you will get a rebound hypertension. Okay, so that's why, and again it also results in the clonidine withdrawal symptoms. Okay? Then also clonidine has an anticholinergic effect. अभी anticholinergic मतलब क्या? So obviously dryness of mouth, constipation, urinary retention, ये सब उसमें आएगा. तो आप बोलेंगे सर आपने बोला ही नहीं कॉन्स्टिपेशन करता है, आपने बोला ही नहीं यूरिन रिटेंशन करता है. तो एंटीकोलिजिक मतलब कलेक्टिवली चार पांच आएगा इसमें, ब्रैडिकार्डिया सब आएगा. So impotence also produces the impotence. It will produce the impotence in the males. So male will not be able to reproduce. Okay. Then sodium water retention also causes the sodium water retention. So basically ये edema करेगा, sodium water retention. Then next इसमें आता है मिथाइल डोपा. So in addition to above, अभी ये जो देखा है अपने sedation, rebound hypertension, anticholinergic effect, impotence, इसके addition में क्या करता है? These adverse effect plus hemolytic anemia. That is the adverse effect of methyl dopa. Now third category is there adrenergic neuron blockers. Adrenergic neuron blockers, in that what they will do, they will deplete the catecholamines from binding site, from storage site. So in that you have guanethidine, reserpine, etc., etc. So all the adrenergic neuron blockers, they have important adverse effect known as a postural hypotension. Postural hypotension. So अगर मैं बैठा हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, अगर मैं लेट जाऊंगा तो ब्लड प्रेशर ड्रास्टिकली कम हो जाएगा. मैं खड़ा हूँ अभी, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, अगर मैं बैठ जाऊंगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, सो जाऊंगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. सो नोन एज अ postural hypotension because of the change in the posture. Okay, it is also known as orthostatic hypotension. Also known as orthostatic hypotension.
ऑर्थोस्टैटिक मतलब क्या है? ऑर्थो का पोजीशन चेंज किया आपने, मतलब आपके पोस्चर चेंज किया या फिर आपको पोजीशन चेंज किया तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। गोनेथिन, then again it causes sexual dysfunction, diarrhea. These are the adverse effects. Gonethidine. Then reserpine also cause drowsiness. So reserpine also cause depression, seen as depression, and that's why reserpine is also used in the your and as antipsychotic. It also induces the Parkinsonism. It also produces the postural hypotension, edema, sexual dysfunction, and it also produces the suicidal tendency. Suicidal tendency. So these are the adverse effects of your antihypertensive drug, particularly belonging to diuretics, central alpha agonist, and antisyntonic neuron blockers. Now next we'll see the adverse effect of alpha blockers. So there is one more category of drug used in the hypertension, alpha blockers. So what will they do? They will decrease the peripheral resistance by blocking the alpha receptor on the peripheral blood vessel. क्योंकि अल्फा रिसेप्टर जो होता है पेरिफेरल ब्लड वेसल में आर्ट्रियोल्स के ऊपर, तो वो क्या करता है आपका, वो आर्ट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन करता है, उसके कारण क्या होता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है और उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपको मालूम है, अपन देखा है। सो alpha blockers, they will decrease the peripheral resistance by dilating the arterioles. So what are the adverse effect of these? इसमें बहुत सारा क्लास है ना, जैसे सिलेक्टिव है, नॉन सिलेक्टिव है। नॉन सिलेक्टिव में आता है आपका फिनॉक्सीबेंजामाइन है ना, इंडोरामाइन, टोलेजोलिन है ना। बाकी सिलेक्टिव में आता है प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्सोसिन है ना, टेम्सोलोसिन, अल्पुरोसिन। तो उसका एडवर्स इफेक्ट होता है फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन। फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन मतलब ये क्या करेंगे, जैसे आप इनका डोज दोगे तो हाइपोटेंशन हो जाएगा, जैसे इनका डोज दोगे तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। सो दे विल प्रोड्यूस फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन, दैट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ योर अल्फा ब्लॉकर्स, एंड दे आल्सो प्रोड्यूस टैकीकार्डिया, first dose hypotension or orthostatic hypotension and tachycardia. Okay? These are the main adverse effect of beta alpha blockers. बाद में आएगा आपका बीटा ब्लॉकर्स, इसमें बहुत सारे क्लासेस है आपका, सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव, बीटा ब्लॉकर विद इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, बीटा ब्लॉकर्स विद एडिशनल vasodilator property, बीटा ब्लॉकर्स having alpha blocking activity. ऐसा बहुत सारा क्लासेस. Decrease in the cardiac output. What they will do? So first they will act on a beta 1 receptor, है ना, beta 1 receptor on the heart, and they will decrease the heart rate and force of contraction. That's why they will decrease the cardiac output. That's why they will decrease the blood pressure. Non-selective beta blockers. What are the adverse effects of non-selective beta blockers? तो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स मतलब दे विल ब्लॉक बीटा 1 एज वेल एज बीटा 2। आपको मालूम है बीटा 1 कहाँ पे होता है, हार्ट में होता है, अब बीटा 1 कहाँ पे होता है, किडनी में होता है, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स में। बीटा 2 कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है, बीटा 2 है ना, लंग मतलब ये ब्रोंकियल स्मोक मसल में होता है, बीटा 2 कहाँ पे होता है, और स्केलेटल ब्लड वेसल में होता है, राइट। सो नॉन सिलेक्टिव मतलब क्या होता है, दे विल ब्लॉक बीटा 1 एज वेल एज बीटा 2। नाउ बीटा 1 ब्लॉकिंग एक्टिविटी इज डिजायर्ड इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, बीटा 1 को ब्लॉक करना ये डिजायर्ड है, इट इज एक्सपेक्टेड, but beta 2 blocking is not desired, it is undesired, and because of that they will have an adverse effect. So you know that beta 2 receptor present in the smooth muscles of your blood vessel, smooth muscles of your bronchial smooth muscle. Again beta 2 receptor is also responsible for the release of insulin from the pancreatic island. Okay, now if they blocks beta 1 plus beta 2, so what will happen? So obviously they will produce hyperglycemia. So non-selective beta blockers, they will cause hyperglycemia due to beta 2 blockage, beta 2 blockage in the pancreas. They will cause bronchospasm or aggravate the asthma, right? Then hyperlipidemia, they also increase the lipid level, and they also cause the vasoconstriction. कब करेंगे vasoconstriction, क्यों करते हैं? Because beta 2 receptor on the skeletal blood vessel responsible for the dilation of skeletal blood vessel, यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हो मतलब vasoconstriction हो जाएगा. They will also cause rebound hypotension, rebound hypotension, rebound hypertension, rebound will also cause the rebound. It is with all kind of beta blockers, selective as well as then cardiac arrhythmia. They can produce cardiac arrhythmia because they are playing with the SA node. Okay? Then they will cause fatigue, lethargy, and impotence. Impotence in the male. These are the adverse effects of beta blockers. Now, what are the adverse effects of your vasodilators? Vasodilator में अपन ने देखा है, vasodilators they are either arteriolar dilator, artery को dilate करने वाले, है ना? Am I audible to you? Audible है क्या? Arteriolar dilator, then venodilator, and then arterio plus venodilator. तो arteriolar dilator कौन है भाई? तो arteriolar dilator में आता है calcium channel blockers,
उसके बाद में हाइड्रोलाइसिन आता है, मिनॉक्सिडिल आता है, डाइऑक्साइड आता है। वेनोडाइलेटर में कौन आता है भाई? वेनोडाइलेटर में आता है आपका, है ना, वेनोडाइलेटर में आता है आपका नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स। और आर्ट्रियो प्लस वेनोडाइलेटर में आता है आपका सोडियम नाइट्रोक्साइड। तो ये है। तो व्हाट विल दे डू? दे विल डिक्रीज द पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। सो वासोडाइलेशन मतलब क्या होगा? तो ये जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। So they will decrease the peripheral vascular resistance. You know that blood pressure is equal to cardiac output into peripheral resistance. What they will do? All vasodilators, they will produce a reflex tachycardia. Reflex. They will cause sodium water retention. They will cause headache. Headache क्यों करेगा? Because of the vasodilation of cerebrum. तो vasodilator मतलब क्या है? सिर्फ वो क्या selectively आपके सिर्फ बाकी ब्लड वेसल डायरेक्ट नहीं करेगा, आपके जितने भी ब्लड वेसल है बारी बारी, मतलब छोटे छोटे आर्टरी उसको सबको डायलेट करेगा। तो इट विल डायलेट द blood vessels of cerebrum also. That's why headache. Okay. Then in addition to this, tachycardia, sodium retention, sodium water retention, headache. So hydrolyzin will cause serum sickness and lupus erythematosus. Serum sickness and lupus erythematosus, they are caused by hydrolyzin. Then minoxidil. Minoxidil क्या करता है? It will cause hypertrichosis. Hypertrichosis मतलब क्या? Excessive growth of hairs, right? So if excessive growth of hairs is there on in a female, फीमेल के चेहरे पे अगर एक्सेसिव ग्रोथ हो गया हेयर का, उसको अपन बोलते हैं हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म, हिर्सुटिज्म। So this minoxidil will cause hypertrichosis or hirsutism in the females. Diazoxide will cause hyperglycemia. Diazoxide will cause hyperglycemia. Sodium nitroprusside जो होता है that will cause, because इसमें क्या है कि साइनाइड ग्रुप होता है एंड आइसोथायोसाइड ग्रुप होता है, so it will increase the cyanide and isothiocyanate ion toxicity, right? Then next आता है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। am I audible to you? are you getting or not? समझ रहा है यहाँ पे? Okay. So blood vessel dilation and blocking of calcium ion channel of the heart. So calcium channel blocker क्या करेंगे? They will block the calcium ion and which is responsible for the vasoconstriction as well as which is responsible for the contraction of your heart. So what will they do? They will dilate the blood vessel by blocking the calcium ion channel, and also they will decrease the cardiac output by acting on a calcium channels of your heart. So what will they have adverse effect like reflex tachycardia, increase in the risk of angina. Calcium channel blockers क्या करते हैं? They will increase the risk of angina, particularly mostly it is with the nifedipine. Nifedipine ज़्यादा करता है. They are contraindicated in case of congestive heart failure. Sick sinus syndrome contraindicated in case of sick. They may produce ankle edema. So particularly verapamil. Verapamil will produce ankle edema. Verapamil will produce constipation. So these are the adverse effect of your calcium channel. अभी एक दो क्लास बचा है आपका। So next one is ACE inhibitor. ACE मतलब एक कदुरती नहीं तो फिर बोलेंगे एक कदुरती। तो एक कदुरती नहीं है वो। ACE मतलब angiotensin converting enzyme inhibitors. Okay. So you know that this enzyme plays very important role in the kidney. So it convert angiotensin 1 into angiotensin second, right? Which is a angiotensin second is a potent vasoconstrictor as well as it also stimulates the aldosterone. So inhibit that. Okay. So ACE inhibitor, what they will do? They will prevent the conversion of angiotensin 1 to 2 by inhibiting the ACE. Right. Now, what are the adverse effects? Again, they will cause postural hypotension. Postural, mostly with the captopril. Most common adverse effect of this captopril. Most common adverse effect of this captopril is persistent dry cough. इसके ऊपर दो बार क्वेश्चन आ चुका है. Persistent dry cough. Most common adverse effect of this ACE inhibitors, captopril, lisinopril, and all prils. Persistent dry cough. Now why? Because we have seen already this ACE angiotensin converting enzyme is not only enzyme which convert angiotensin 1 to 2, but also it metabolizes the bradykinin and other important peptide of your body. So increase in the bradykinin level. So increase in the bradykinin level because of the inhibition of ACE. It causes the bronchoconstriction or asthma. Okay, and that is a persistent dry cough. And again because of that increased bradykinin level, you will have angioedema. तो कल मैंने एक बोला था कि मुझे टर्म याद नहीं आ रहा है. This is nothing but the angioedema. What do you mean by angioedema? So there is nothing but the swelling of your nose, larynx, pharynx. उसको बोलेंगे अपन angioedema, right? Now hyperkalemia, again it will increase the potassium level. Okay? Then dysgeusia. Dysgeusia मतलब क्या है? So difficulty in the taste.
or problem in the test, dysgeusia, acute renal failure and teratogenicity. So they are the teratogenic, they are contraindicated, they are not used in the pregnancy. These are the adverse effect of your ACE inhibitors. लास्ट में आता है आपका 81 receptor blockers, मतलब क्या है, angiotensin receptor blockers, SARTANs. So what they will do, they will block the angiotensin second receptor and will prevent the angiotensin from vasoconstriction. So they will also decrease the peripheral resistance. So all these drugs will also have similar adverse effect as that of the ACE inhibitor. जो ACE inhibitor के adverse effect है ऊपर वाले, वो सब इनके भी होंगे except dry cough and angioedema. Except dry cough and angioedema, ये नहीं होंगे. तो that's why है ना, उनकी वजह से कारण क्या है कि जिसको अस्थमा है और उसको ब्लड प्रेशर भी है, तो ये वाले ड्रग यूज नहीं करना है ना. कौन से वाले ड्रग यूज करना है भाई, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार. पेशेंट, hypertension patient having asthma, the following drug is suitable. So 81 blockers, okay, so sartans, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका. This was your previous part, whatever. So we have seen the hypertension, we have seen the each and every single thing about the hypertension, drug used in the hypertension. Okay, so after finishing this anginal drug and congestive cardiac failure, we will see the chemistry of same. Okay? So now we'll see the next chapter known as a drug used in the angina. Not actually anti-anginal drug नहीं बोल सकते अपन इसको, because जिनको properly वो समझ में आता है chapter, वो एंटी एंजिनल बोलेंगे नहीं, लेकिन आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, एंटी एंजिनल. बट दीज आर द ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना. ओके, angina, because these drugs, they will not correct, they will not clear angina. So angina is nothing but the symptom, it is not a disease. It is a symptom of myocardial ischemia. मायोकार्डियम जो हार्ट का, उसको अगर प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, प्रॉपरली उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो वो वहां से सेल क्या होते हैं, धीरे धीरे मरना चालू होते हैं, उनको बोलते हैं अपन इश्चेमिया. सो इश्चेमिया मींस there is a decreased blood supply and oxygen supply, known as ischemia. So angina pectoris is nothing but the, simply in your language, chest pain. The pain will arise from your heart and it will be referred to your left side of your arm and also left back side, so known as angina pectoris. Now the most important cause of this angina pectoris is nothing but the, okay, so there are few causes, like one of the causes is nothing but the arteriosclerosis. अगर आपकी coronary artery में कोई deposition हो गया lipids का, there is deposition of your cholesterol plaque, so due to that deposition there is a narrowing of coronary artery. coronary artery जो होता है वो उसका साइज कम हो जाता है, क्योंकि अंदर से क्या है, डिपोजिट हो गए, जो ब्लड फ्लो जाना है हार्ट को वो कम हो जाएगा. तो देयर इज अ डिक्रीज ब्लड फ्लो ड्यू टू आर्थरोस्क्लेरोसिस. ओके, नाउ दिस डिक्रीज ब्लड फ्लो, अगर आप, मैं बैठा हूँ, अगर मेरे कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक है, फिर मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, बैठा हूँ मस्त रिलैक्स, तो मुझे क्या है कि वैसे भी मेरा हार्ट कम काम कर रहा है जब मैं बैठा हूँ. तो जब मैं, व्हेन आई एम इन अ रेस्ट, माय हार्ट इज डूइंग लेस वर्क, very less work, so my heart is also requiring very less energy, so it will so whatever blood supply is there, that is sufficient. But as I told you, there is a block in my coronary artery, and if I am sitting, so whatever blood supply is there to my heart, that is a sufficient to meet the normal requirement of your heart energy requirement. But suppose that I stand up and I started running, so what will happen, so I will require more energy. My heart is also working more, so heart will also require more energy. Now at this condition, so as there is a blockage in your coronary artery, so at that time, when you are under stress, when you are under working, when you are performing exercise, so at that time, so there will not be sufficient blood supply to your heart due to blockage of that coronary artery. Now at that time your heart will pain, that is known as angina. Okay, so we'll see it in a detail. Am I audible to you? So angina pectoris, it is not a disease, it is symptoms of myocardial ischemia. So anti-anginal drug or drug used in the angina. So angina pectoris क्या है? It is not a disease, but it is a symptom of myocardial ischemia produced by variety of ways. Variety of ways. So different ways हो सकते हैं. Why? So, okay, for example, so most of the important cause for these symptoms, it is nothing but the one important cause is nothing but the arteriosclerosis. If there is a deposition of cholesterol on in your inner layer of your coronary artery, one of the causes is arteriosclerosis. Second cause is nothing but the
Okay, second cause is nothing but the disease of your blood vessels. If your blood vessel is not elastic, so again that, so vascular disease, second reason is a vascular disease. अगर आपका ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट नहीं हो पा रहा है, डायलेट नहीं हो पा रहा है, वो सब क्या है, वो सब इलास्टिसिटी उसका लॉस हो चुका है. सो ड्यू टू दैट अगेन सिम्टम्स ऑफ एंजाइना. सेकंड रीजन. थर्ड रीजन क्या हो सकता है? और ओके, थर्ड रीजन इज नथिंग बट द एक्सट्रीम स्ट्रेस. आपको रात में ही पता चला की आपके पिल्लू का डेथ हो गया, को दिन भर चॅटिंग करते हो, पिल्लू जेवण झालं का, पिल्लू जेवण, पिल्लू खाना खाया क्या, बाबू खाना खाया क्या, वो अचानक उसका विकेट गिर जाए और आपको रात को 12 बजे फोन आए, तो आपके हाथ में क्या होता है, फिर पेन होता है. सो एक्सट्रीम स्ट्रेस है ना, एक्सट्रीम स्ट्रेस उसके कारण, एक्सट्रीम इमोशंस, ओके, एक्सरसाइज, ओके. सो these are the reasons and in this condition only you will develop pain in the heart known as angina. But the main reason is nothing but the arteriosclerosis. Somehow there is either deposition of your cholesterol in the coronary artery, or there is a uh, vascular diseases, or there is a decreased oxygen supply to your myocardium. So that's why, right? So angina pectoris is not a disease; it is a symptom of myocardial ischemia produced by a variety of ways. It develops as a result of imbalance between oxygen demand and oxygen supply of myocardium. जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया है, तो मेरा तो कोई इरादा नहीं कि आपके हार्ट में ब्लॉक करना है, बट आपका हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, सो आपको तो नहीं करना है. जैसे मेरे हार्ट में कोरोनरी आर्टरी में क्या है कि देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, वहां पे कोलेस्ट्रॉल है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो चुका है. फिर मैं नॉर्मली आपको बोल रहा हूँ, बैठा हूँ, सो आई नीड अ लेस एनर्जी टू माय हार्ट, मायोकार्डियम, कि अभी मेरा हार्ट जो है वो कम काम कर रहा है ना, उतने जोर से नहीं धड़क रहा है. जब मैं भागूंगा तो जोर जोर से धड़का. ठीक, तो अभी मेरे हार्ट को एनर्जी कम लग रहा है. सो अगर ब्लड वेसल के अंदर डिपोजिशन है कोलेस्ट्रॉल का, तो पूरा तो ब्लॉक नहीं है, थोड़ा बहुत ओपन रहता है, तो उसमें का जो ब्लड फ्लो जाता है वो सफिशियंट है. अभी नॉर्मल हार्ट के लिए वो सफिशियंट है. सो दैट्स व्हाई एट प्रेजेंट आई एम नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम. मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, मुझे कोई चेस्ट पेन नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मैं रेस्ट कर रहा हूँ. रेस्ट में बेस्ट हो मैं, है ना, रेस्ट में बैठा हूँ, बेस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना. क्योंकि अभी जो ब्लड लग रहा है हार्ट को, मायोकार्डियम को, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जो लग रहा है वो सफिशियंट है अभी. लेकिन मान लीजिए कि मैं अभी खड़ा हो गया, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या मैं भाग रहा हूँ, तो मुझे क्या है कि ड्यू टू एक्सरसाइज, ड्यू टू increased वर्कलोड, so your heart is also beating fast, so your heart is also working fast. Now to your heart there is an increased demand of oxygen, but now as I have coronary arteriosclerosis, so there is a less blood supply to my heart. So at that time there is a demand is increased and supply is less. So there is absolute imbalance between demand and supply. That is due to either blockage in the coronary artery, or that is either due to uh, due to another reason. For example, spasm of coronary artery. Again, that is due to loss of elasticity of coronary artery. So there are different reasons. The main problem is that there is an imbalance between demand and supply, imbalance between oxygen demand and supply to the myocardium. यहाँ पे क्या हो रहा है, मायोकार्डियम को ऑक्सीजन सप्लाई मतलब ब्लड कम जा रहा है, जिसको ज्यादा लग रहा है, लेकिन जा रहा है कम. लेकिन ज्यादा ब्लड कब लगता है, जब वो ज्यादा वर्क कर रहा है. ज्यादा वर्क कब करते हो आप, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, या फिर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है तो आपका हार्ट जोर जोर से धड़कने लगता है. तो एक्सट्रीम इमोशन, लॉस ऑफ लव्ड वंस, आप जिससे प्यार करते हो वो चला गया इस दुनिया से, तो आपको एक इमोशनल स्ट्रेस आता है, इमोशनल धक्का पड़ता है. उसके कारण भी क्या होता है कि there is a increased workload on heart. So that's why. So angina symptoms, they are only at a, they are only at when you are under stress, when you are under exercise, when you are under, emotion. Are you getting or not? Now physiology of blood vessel, tone of blood vessel. So physiology of tone of blood vessel. ब्लड वेसल का टोन मतलब कंस्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन कैसे होता है. So endothelium means what? Inner layer of blood vessel. Endothelium of blood vessel will control the tone of blood vessel by releasing the chemicals which are responsible for the constriction as well as dilation. So your
blood vessels, inner layer of blood vessel, known as endothelium. Endothelial cell will control the vascular tone by producing the vasodilator. Vasodilator कौन से थे? So they will produce a vasodilator. For example, vasodilator like your prostacyclins. So locally, prostacyclins they will act as a vasodilator. Then EDRF, that is endothelium derived relaxing factor. Okay? Endothelium derived relaxing factor. Also known as it is nothing but the nitric oxide. इसको ये अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड. इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है. व्हाट इज एंडोथेलियम derived relaxing factor? It is nothing but the nitric oxide. Nitric oxide is nothing but the endothelium derived relaxing factor. So it will dilate the blood vessel. Okay. Now, as there is a as endothelium also produce relaxing factor, endothelium will also produce some constriction factor. So also produce vasoconstrictor. वो क्या है? इसको बोलते हैं अपन endothelium and thromboxaneto. So endothelium thromboxaneto, they are the vasoconstrictor produced by endothelium of blood vessel, whereas prostacyclin and nitric oxide, that is EDRF, endothelium derived relaxing factor, endothelium derived relaxing factor, that is known as a vasodilator. So that is produced by this vascular endothelium. Now which controls the tone of your blood vessel. तो ब्लड वेसल रिलैक्स होने के लिए ये नाइट्रिक ऑक्साइड लगता है और प्रोस्टाग्लैंडिन लगता है. कंस्ट्रिक्ट होने के लिए क्या लगेगा? एंडोथेलिन और थ्रोम्बोक्सिन A2, ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं लोकली. So they are produced locally by endothelium, right? Now nitric oxide, you know that what is nitric oxide? Endothelium derived relaxing factor. Question आ चुका है इसके ऊपर. Now it is known as a nitric oxide. It is known as a nitric. Now it is synthesized from which amino acid? इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया है. So nitric oxide is synthesized from arginine amino acid. It is synthesized from arginine amino acid by enzyme known as a nitric oxide synthetase. Nitric oxide synthetase. Denoted as a NOS. Nitric oxide synthetase. There was a question in GPAT 2023. Sorry, 2022. 2022 में एक क्वेश्चन था, how many isotype of nitric oxide synthetase are there? ये सिर्फ मेरे बुक में था और एक स्टैंडर्ड बुक है फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोथेरापेटिक्स बाय सातोशी बंडर, तो वो एक बुक में था क्योंकि वो बुक में से ही मैंने लिया. ठीक है, तो बाकी बुक्स में ये नहीं था और बहुत सारे बच्चों को ये मालूम नहीं. ये तो ऑलरेडी मैं ही पढ़ा था लास्ट ईयर. सो remember there are three isoenzymes which synthesize the nitric oxide synthesis. So like this, type 1 NOS, type 1 NOS, type 1 nitric oxide synthesis. So it is the high amount of this enzyme is present in the neuronal and non-neuronal tissue, है ना. ये न्यूरॉन्स में होता है, नॉन न्यूरनल टिश्यू में होता है. टाइप 1 NOS. टाइप 2 नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस कहाँ पे होता है? इट इज फाउंड इन द मैक्रोफेजेस. ओके, मैक्रोफेजेस, कपर सेल ऑफ लिवर, देन फाइब्रोब्लास्ट, वेस्कुलर, स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल में ये रहेगा आपका टाइप 2 नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस. न्यूट्रोफिल्स, एंडोथेलियल सेल्स. ओके, टाइप 1 एंड टाइप 3. तीसरा टाइप होता है आपका टाइप 3 नाइट्रिक ऑक्साइड. तो क्वेश्चन ऐसे आया था, टाइप 3 नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस इज फाउंड इन द first it was identified as an enzyme which produces the endothelium derived spectrum in the endothelium. तो क्वेश्चन आया था 2022 में, how many types of nitric oxide synthesis are available? Isotypes of nitric oxide synthesis. तो कितना होता है? 1 2 3. There are 3 nitric oxide synthesis. There are 3 isotypes of nitric oxide synthesis. क्वेश्चन ये आया था GPAT 2022 में. You can check the paper. पहला है टाइप 1, दूसरा है टाइप 2 and तीसरा है टाइप 3. Three types of nitric oxides, there is isotypes. Okay? Isotypes of this enzyme. So type 1 found in the neuronal and non-neuronal tissue. Type 2 found in the macrophages, Kupper cell, fibroblast, vascular, smooth muscle, neutrophils, endothelial cells. Now type 1 and type 3. Type 1 and type 3A. They are the constructive nitric oxide synthesis enzyme. They are the constructive enzyme. Type 1, type 3. And type 2 is inducible. टाइप 2 इज इंड्यूसिबल. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, याद रखना है आपको. टाइप 2 इज इंड्यूसिबल. टाइप 2 इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द रेस्टिंग सेल्स, है ना. मतलब कहने का मतलब क्या है इसमें? आर यू गेटिंग और नॉट? आर यू गेटिंग और नॉट? देयर आर 3 एंजाइम्स known as a nitric oxide synthesis. There are 3 isotypes of enzyme nitric oxide synthesis. Type 1, type 2, type 3. Now type 1 and type 3, they are known as a constructive enzyme.
constructive means they are present in the body normally also. Type 2 is not expressed in all tissues. Okay, it is inducible whenever it is required, whenever there is a requirement of dilation, तो वो तब वो तैयार होगा. Type second, nitric oxide synthesis. So remember, so there are three type of nitric oxide synthesis. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है जैसे बोला है. What are the categories of drug which will act on a which are used in the angina pectoris? So what happens in the angina pectoris? What are the treatment strategy? तो आपको मालूम है angina pectoris में क्या हो रहा है? There is some blockage in the coronary artery, or there is a spasm of coronary artery, and due to that coronary artery spasm, there is a disturbance in the demand and supply of oxygen. है ना? So there is a increased demand of myocardium, but there is a less supply of blood or oxygen to the myocardium. In that condition, what you will do? There are 3-4 strategies. Either first you can dilate the coronary vessel, you can dilate the coronary artery. Coronary artery आप dilate कर सकते हो. Vasodilators है ना? Vasodilators are used. Okay? Then either you can decrease the oxygen demand of your myocardium. Okay? Oxygen demand कैसे कम कर सकते हो? How you can decrease the oxygen demand of myocardium? By decreasing its work. है ना? ऑक्सीजन डिमांड कब हो रहा है? आपको एनर्जी डिमांड कब लगेगा? जब आप काम कर रहे हो, जब आप वर्क कर रहे हो, तभी आपको ज्यादा एनर्जी लगे ना. तो बैठे बैठे यहाँ पे सुस्त होके हाथी जैसे बैठे हुआ, आपको क्या एनर्जी लगने वाला है? ठीक है. तो आपको जब काम कर रहे हो आप, तभी आपको एनर्जी लगेगा. तो वैसे ही आपका हार्ट जब काम करेगा, उसका काम क्या है? धड़कना. है ना? तो वैसे तो आपका आपका हार्ट जो है ना, किसी के लिए भी धड़कता है ना? आप बोलते हो है ना, जैसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, जन्नत की कोई और नहीं, मेरे कॉलेज की लड़की. किसी के लिए दिल धड़कता नहीं आपका, वो आप खुद के लिए धड़कता. ठीक है. वो अगर धड़कना बंद किया तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा. So heart beating means what? Heart is working. Okay. So when if it is beating faster, if it is pumping blood faster, so it will require more oxygen. So how you can decrease the oxygen demand of your heart? So just by simply decreasing the workload. How will decrease the blood workload? By blocking the beta receptor. So beta blockers are used. So beta blockers, they will decrease the workload. Okay. Again, also you can decrease the, okay, also increase, okay, first you can dilate the blood vessels. Second thing, you can decrease the workload of your heart, oxygen demand of your heart. तो ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज करो बाय डिक्रीजिंग द वर्कलोड. ये एक स्ट्रेटजी हो सकता है आपका. थर्ड क्या हो सकता है स्ट्रेटजी? कि हार्ट के ऊपर जो प्रेशर है वो कम करो. है ना? तो अगर ज्यादा ब्लड आपके हार्ट में आएगा तो उसको ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा. है ना? सो इफ मोर ब्लड इज कमिंग टू योर लेफ्ट auricle, if more blood is coming to your right atrium, that is known as a venous return. That is known as a venous return. तो वेन जो भी आपके ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम में डालते हैं उसको बोलते हैं अपन वेनस रिटर्न. एंड दैट इज नथिंग बट द प्रीलोड. सो मोर इज द प्रीलोड, मोर विल बी द आफ्टरलोड. प्रीलोड, ज्यादा ब्लड बॉडी में से राइट एट्रियम में आ रहा है आपका, तो ज्यादा राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो ज्यादा राइट वेंट्रिकल से ज्यादा लंग्स में जाएगा, और ज्यादा राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, वही ज्यादा लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, वही से ज्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड हो गया, दैट इज नोन एज that is known as a preload. Okay, that is known as a preload. That is known as a afterload. So whatever venous return is there from body to your left, to your right auricle. यहाँ पे राइट एट्रियम होता है, राइट ऑरिकल होता है. तो जो भी वेनस रिटर्न जो आपका, उसको अपन करेंगे प्रीलोड. और जो भी लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है आपका, उसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. So left ventricular end diastolic pressure. Okay, so that is known as a afterload. Okay, so you can decrease the preload, that will result in the decrease in the afterload. तो obviously blood कम रहेगा तो उसको ज्यादा पंप नहीं करना पड़ेगा. देखो, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में बहुत ज्यादा ब्लड है तो उसको जोर से पंप करना पड़ेगा ना. तो the heart should pump forcefully, so it will require more energy, more oxygen. So obviously अगर उसमें हार्ट में ब्लड ही कम जाने जाने दिया आपने, तो उसका काम कम हो जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगा. राइट. सो यू कैन डिक्रीज द प्रीलोड, सो दैट रिजल्ट इन द डिक्रीज द आफ्टरलोड, एंड दैट विल डिक्रीज द सिम्टम्स ऑफ angina. Okay, so that's how there are different strategies. Okay, so you use vasodilators, or you use beta blockers, or you use
To decrease the preload, use vasodilators, calcium channel blockers and all that, potassium channel openers and all that. Okay, so so type 1 drug, they will reduce the afterload, they will reduce the afterload. Type 1 drug कुठले कौन से होता है afterload decrease करने वाले. Afterload मतलब क्या है? So it is nothing but the volume or pressure of blood, okay, volume of blood in the left ventricle. So that is known as the left ventricular end diastolic pressure. So that is decreased by calcium channel blockers, beta blockers and nitrates. Then second category आता है which that this drug will reduce the preload. Which kind of drug will reduce the preload? So nitrates. Preload कहाँ से आता है? सब vein से आ रहा है. So those drug which dilate the vein, they are known as venodilator and they will decrease the preload. Venodilator will decrease the preload. Arteriolar dilator, they will decrease the afterload. Okay, right? You know that veins are known as a capacitance blood vessel. Veins are known as a capacitance blood vessel, and arteries they are known as a resistant blood vessel. अपन ने देखा है resistant blood vessel. Very resistance is offered by arteries. Right? Now, third category of drug, negative inotropic drugs. Negative inotropic drugs. Negative inotropic. What will they do? They will act on a heart. Negative inotropic drug, they will act on a heart. They will decrease the force of contraction of heart, and they will decrease the workload on heart. They will decrease the oxygen consumption. Right? Right? So in that you have beta blockers, calcium channel blockers, beta blockers and calcium channel blockers. And coronary dilators, coronary artery dilators, they are known as the nitrates and calcium channel blockers. So they are nothing but these are the different categories of drug. They are used in the angina pectoris. Are you getting or not? These are the category of drug that can be used in the angina. Now, effect of nitric oxide. So what is the effect of nitric oxide? So as you know, nitric oxide is endothelium derived latex effector. So that it exerts effects by two ways: either direct effect that is mediated by nitric oxide itself and produced by interaction of soluble guanyl cyclase enzyme होता है, that is a receptor for nitric oxide, and indirect effect होता है that is mediated by reactive nitrogen with the oxygen and superoxide radical and cytotoxic peroxynitride action. तो आपको एक डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो. There are two type of effect produced by nitric oxide, direct and indirect effect. Then what are the functions of nitric oxide? So function क्या है? Vascular smooth muscle relaxation. So it will relax the smooth muscle, dilate the blood vessel. Nitric oxide release cause decrease in the calcium influx into endothelial cell. Calcium का entry भी कम करता है nitric. Now impaired production of nitric oxide. If there is impaired production in the of the nitric oxide due to damage in the vascular endothelium, आपका endothelium layer जो blood vessel का वो damage हो गया है, so there is impaired production of nitric oxide. Now impaired production of nitric oxide, that is implicated, मतलब क्या? So there is a impaired production of nitric oxide in case of hypertension, then cerebral and coronary vasospasm. cerebral blood vessel जो होता है वो constrict होते हैं, किसके कारण? ये impaired है, कम प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर there is a defective production of nitric oxide in the hypertension as well as cerebral as well as coronary vasospasm, also in the arteriosclerosis, ischemic reperfusion injury, ischemic reperfusion injury. ये सब में क्या हो रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन जो है ना वो डिफेक्टिव है, सो देयर इज अ लेस. और नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल आरबीसी में होता है. व्हाट इज रोल ऑफ आरबीसी? What is the role of nitric oxide in the RBC? What is the relation of nitric oxide in the RBC? So nitric oxide in the RBC will prevent the sickling of RBC. Will keep RBC in intact. So that's why nitric oxide अगर RBC में नहीं होगा तो क्या होगा? Sickling of RBC. Okay. And that's why arginine. Arginine is a precursor amino acid for nitric oxide, and that's why it is used in the sickle cell. Nitric oxide will cause inhibition of platelet aggregation. It will cause smooth muscle relaxation. It is a smooth muscle relaxant. Okay, cholinergic neuron innervated variety of smooth muscle. जो असली कोलिन का न्यूरॉन है वो क्या है? बहुत सारे स्मूथ मसल को सप्लाई होता है उसको. So cholinergic neurons, they innervate variety of smooth muscle, like for example esophagus. Esophagus का smooth muscle है ना, असली कोलिन का है. And corpus cavernosus. कॉर्पस कैवर्नोसस ऑफ योर पेनिस. पेनिस का जो
contractile muscle होता है corpus cavernosus, that is also innervated by this acetylcholine containing neuron, and there is a release of nitric oxide, वहाँ पे release होता है nitric oxide, and that's why one of the category of drug known as a phosphodiesterase inhibitor, phosphodiesterase 5 inhibitor, sildenafil citrate, vardenafil, tadalafil, so they inhibit the phosphodiesterase and they produce the relaxation of blood vessel by producing the nitric oxide, and that's why they are used in the erectile dysfunction. तो भी एक अलग सा चैप्टर होता है. Endothelin, endogenous vasoconstrictor. Endothelin का it is a vasoconstrictor. We have already seen. So there are different types. Endothelin 1, 2, 3. They are the subtypes of endothelin. But most important होता है आपका endothelin 1. Okay? They are a vasoconstrictor. Now anginal index means what? Anginal index is given by heart rate into systolic blood pressure. Systolic blood pressure कितना है और heart rate कितना है उसके ऊपर anginal index एक बार एक फॉर्मूला पूछते हैं इसलिए अपने इंक्लूड किया है. What is anginal index? So heart rate into systolic blood pressure. You can see what happens during the angina pectoris. As I told you, there is a coronary artery block. So you can see over here. This is known as a coronary artery block. जो दिख रहा है आपको dark area. This is known as a atheroma. Atheroma means deposition of arteriosclerotic plaque. Okay? Now, due to this, there is a narrowing of blood vessel. So whatever blood which is going to this area, so that is decreased. Now, normally the pressure to this small tiny blood vessel is around 5 mm of Hg end diastolic pressure. Okay. Now, at this is a condition at a normal. Okay. Now, when there is an attack, what happens? So the pressure over there, यहाँ पे जो pressure है वो बढ़ जाता है. So it increases up to 25 mm. So that leads to ischemic and subendocardial zone. Subendocardial zone में ischemic area में ये pressure बढ़ता है during the attack of angina, and that's why it pains. You can see normal blood vessel. How is a normal blood vessel? Normal blood vessel कैसा होगा? ये ऐसा होगा. Normal blood vessel, normal conducting blood vessel. Now your myocardium जो होता है आपका, myocardium or your heart will get blood. Heart will get blood. Your myocardium will get blood when there is a diastole. जब आपका सिस्टोल हो रहा है तब नहीं. Your heart will get blood during diastole. आपके हार्ट को खुद के लिए भी ब्लड चाहिए होता है. ऐसा नहीं कि मतलब हार्ट के अंदर ब्लड है मतलब वो ऑटोमेटिकली उसको जाएगा, वैसा नहीं. सो हार्ट myocardium of your heart also need blood. That's why there is a coronary artery. So most of the myocardium it will get a blood during diastolic function. So normally what happens at the rest normal blood vessel ऐसा होगा आपका, and during the exercise आपका blood vessel क्या होगा? The lumen of blood vessel will increase. तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, and you can see over here. यहाँ पे जो ये एरिया है, so during the exercise the lumen of blood vessel or that conducting blood vessel means your coronary artery वो बढ़ना चाहिए. Normally जो है वो है एक्सरसाइज कर रहे हो आप बढ़ रहे हैं कंडक्टिंग ब्लड वेसल, एंड रेजिस्टेंट ब्लड वेसल का है ना वो रेस्ट में ऐसा होता है एक्सरसाइज में उसका भी बढ़ जाता है. दैट्स व्हाई फ्लो ऑफ ब्लड इज इंक्रीज्ड इन केस ऑफ एक्सरसाइज टू द myocardium. Now there are different type of angina, but majorly there are two types. Mostly major two type होता है. Classical angina that is also known as a angina with efforts और exertional angina. इसको अपन classical angina बोलते हैं, इसको अपन angina with effort और exertional angina बोलते हैं. So what happens in the coronary artery? So there is a atheroma. There is deposition of arteriosclerotic plaque. Atherosclerosis होगा, deposition of cholesterol. So only this part is. Now during the rest this part is sufficient. इसमें से थोड़ा blood जाएगा. You are not working, your heart is not working too much, so at that time there is a sufficient blood is going to, which is sufficient to meet the demand of heart. But if you are doing exercise, so what is expected? The flow of blood to the myocardium that should be increased like above. ऊपर की कंडीशन में क्या होगा? नॉर्मल में आप रेस्ट में हो तो ऐसा रहेगा, ब्लड वेसल लो इतना रहेगा. अगर आप वर्किंग कर रहे हो तो ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगा और ज़्यादा ब्लड पड़ जाएगा. बट यहाँ पे क्या हो रहा है?
यहाँ पे आपके ब्लड वेसल में आर्थ्रोमा है and if you are doing exercise, so blood flow to the heart will be increased, but as there is a blockage, so blood which is not going to your heart, so blood going to your heart is very less, so there is increased demand of your myocardium for oxygen and blood, but now supply is limited again. That's why you will get a chest pain, that is angina, classical angina. And variant angina में क्या होता है? Variant angina or also known as a presmental angina. Variant angina is also known as a presmental angina, and that is due to vasospasm. That is due to spasm of blood vessel, coronary artery का spasm अगर हो गया, जैसे मान लीजिए आप मस्त खेल रहे हो, हंसते खेलते पल बैठ रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, अचानक से आपको फोन आता है कि कोई लव्ड वन गुजर गया, तो आपको क्या होता है? इंटेंस इमोशनल शॉक बैठता है। उसके कारण क्या होता है? vasospasm, coronary vasospasm, and that's why there is a decreased supply of blood to the myocardium. It may be due to different reasons, for example emotional stress, excessive tension, cigarette smoking and all that. Again, it is also due to the coronary vascular disease. So that is known as a variant angina. Am I audible to you? Audible आएगा? समझ रहा है आपको? So types of angina. Types of angina pectoris. So today I will try to finish this. So basically there are two types. First one is known as a classical angina, or also known as a stable exertional angina. Stable exertional मतलब during exercise, or it is also known as a classical angina, and it is a very common form. ये सबसे ज़्यादा common होता है. Second type होता है उसका variant angina, or also known as a variant angina or presmental angina. Variant angina presmental, it is a uncommon type. Third होता है unstable angina. इसमें बहुत सारा आता है, but basically ये दो कैटेगरी होता है, मेन कैटेगरी. Now what happens in the classical angina? Classical angina, it is also known as angina with effort. Now it is produced by unusual physical exercise or emotional status, and it can be removed by rest and nitrates. मतलब क्या हो रहा है कि जो क्लासिकल एंजाइना है उसमें क्या है? आर्थ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक है आपके कोरोनरी आर्टरी में. जब रेस्ट में हो आप, when you are under rest, so you need a less blood for your myocardium due to that blockage, but still there is some opening. So at the, if you are stable, if you are not at a rest, if you are at a rest, so at that time the blood going to your myocardium, that is sufficient to meet the myocardial oxygen demand. But suppose if you stand up and started doing exercise, now you are working hard, your heart will also work hard, so it will also try to pump more and more blood to, so during that period what happens? Due to blockage of coronary artery, there is a decreased supply of blood to your myocardium, so at that time there is increased demand of your myocardium, but supply is less. So that's why, okay, so that's why it is also known as a angina with effort, and it is produced by अनयूजुअल फिजिकल एक्सरसाइज. अभी रिसेंटली एक न्यूज आया था आपका, साउथ का हीरो था, है ना, साउथ का भी और अपना बॉलीवुड का भी एक टीवी एक्टर है कोई, तो एक्सरसाइज करते करते उसका कार्यक्रम हो गया. एक्सरसाइज करते करते उसका विकेट गिर गया. बिकॉज क्या होता है कि अनयूजुअली अपन है ना, बहुत कभी एक्सरसाइज नहीं किया और अभी भी स्टार्ट किया एक्सरसाइज, है ना, तो उसके पीछे दो तीन रीजन होते हैं. अगर ब्लॉकेज है तो वो अलग रीजन है, अगर नहीं है तो क्या होता है कि एकदम स्ट्रेस से आप एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, कभी एक्सरसाइज किया है नहीं आपने, कभी गया नहीं, आपकी बॉडी को उसका ये नहीं है, रूटीन नहीं है आपकी बॉडी को, यू आर नॉट डूइंग रेगुलरली एक्सरसाइज, एंड सडनली यू यूज टू गो इन द जिम एंड यूज टू डू एक्सरसाइज हेवीली. आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, कभी किया नहीं लेकिन आज कर रहे हो, है ना, क्योंकि वो अपने उसने, क्योंकि उसने आपसे बात करना बंद कर दिया, तो आप टेंशन में गए जिम में और आप फटाफट डंबल वगैरह लेके चेस्ट वगैरह सब, शोल्डर वगैरह सब मार रहे हो. आप बोलेंगे आपको कैसे पता, है ना, मैंने सब किया है. ठीक ठीक. सो आप मार रहे हो, स्ट्रेस से का आप कर रहे हो. व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द स्ट्रेस, ड्यूरिंग दिस इमोशनल फीलिंग, देयर इज अ स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, ड्यू टू दैट आल्सो देयर इज अ डिक्रीज द सप्लाई. तो आपका कभी कभी क्या होता है, विकेट वहीं पे गिर जाता है. तो जैसे एक्टर का होता है, दो तीन एक्टर वैसे ही गए. So also known as angina with effort, and it is produced by unusual exercise or emotional status, and can be removed by just rest or nitrates.
तो इसका जैसे रेस्ट किया आपने, सिम्टम चला जाएगा, पेन चला जाएगा हार्ट में का, फिर आपको वैसोडाइलेटर यूज करना पड़ेगा लाइक नाइट्रेट्स। इन दिस टाइप ऑफ एंजाइना ऑन द ईसीजी ईएसटी वेव इज डिप्रेस्ड। ईसीजी अगर देखेंगे उसका, तो ईएसटी वेव जो होता है पीक्यूआरएसटी, ईएसटी वेव डिक्रीज होता है, एंड देयर इज अ सीवियर आर्थरोस्क्लेरोटिक एप्लिकेशन. Severe arteriosclerotic affiliation means there is arteriosclerosis. That's why. Now second होता है variant angina और angina presmental angina. So vasospastic angina, also known as a vasospastic angina. Vaso मतलब blood vessel, spastic मतलब है ना spasticity. So if there is a constriction of blood vessel, that is known as a vasospastic at a rest. Okay. So vasospastic angina or angina at a rest. Now it is characterized by पेन एट रेस्ट. आप बैठे हो कुछ नहीं, फिर भी आपका दिल से पेन आ रहा है जोर जोर से, है ना, लेफ्ट साइड में. सो वैसोस्पास्टिक एंजाइना हो सकता है. सो ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ योर coronary artery. So again ST elevation is there here in case of presmental angina. तो क्लासिकल एंजाइना में ST डिप्रेशन होता है ST वेव का ECG में, यहाँ पे इलेवेशन, यहाँ पे ST वेव बढ़ जाता है. Now unstable angina is there. So it includes different variety of angina like chronic unstable angina or angina after myocardial infarction, angina after myocardial infarction, or chronic unstable angina. It is also mainly due to atherosclerotic plaque. Atherosclerotic plaque. इसमें भी atherosclerosis होता है. Okay. And occasionally associated with the coronary vasospasm. Coronary artery का spasm अगर हुआ है तो उससे भी ये होता है. Now we'll see the classification of your drug used in the angina. तो ड्रग यूज्ड इन द एंजाइना है ना, तो एंटी एंजाइनल ड्रग नहीं बोल सकते. एंड रिमेंबर दीज ड्रग्स दे विल नॉट करेक्ट द एंजाइना. दीज ड्रग दे विल नॉट करेक्ट द एंजाइना, बिकॉज ये ड्रग क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ देम आर वैसोडाइलेटर्स. ये ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे, लेकिन व्हाट इज द कॉज, अंडरलाइन कॉज इज नथिंग बट द आर्थरोस्क्लेरोसिस. वहाँ पे ब्लॉकेज है आपकी कोरोनरी आर्टरी में, है ना. ये ड्रग क्या कर रहे हैं, सिर्फ वैसो को, ब्लड वेसल को डायलेट कर रहे हैं और ब्लड फ्लो बढ़ा रहे हैं. लेकिन जब तक ये ड्रग डायलेट करेंगे, निकाल दिए तो क्या होगा, फिर से वही कंडीशन. You have to correct the underlying cause. That's why you are doing bypass surgery. You know, you are also using that statins, okay, thrombolytics, etc., etc. तो वो करेक्शन है ना. ये जो ड्रग्स है वो सिर्फ सिम्टम्स रिलीव करेंगे, एंड ये प्रोफिलैक्टिकली यूज होते हैं. सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन द एंजाइना. इसमें पहला कैटेगरी आता है नाइट्रेट्स. Nitrates mean they are vasodilators. So in that you have nitroglycerin GTN, na nitroglycerin, then isosorbide dinitrate, and lot of drugs are there. Okay. Then calcium channel blockers, they are also vasodilators. तो calcium channel blocker क्या है, vasodilators भी है, and again ये heart को भी कम करेंगे. They also decrease the workload on heart and also vasodilator. So verapamil, diltiazem, nifedipine, amlodipine, you know, all that, nicardipine. Then beta blockers. So beta blockers, they will decrease the workload on heart. Propranolol, atenolol, metoprolol, and other beta blockers, right? Then potassium channel openers, they are again vasodilator, nicorandil, pinasadil, etc. Also D. Then PPOX inhibitor. PPOX मतलब क्या है, partial fatty, okay, partial fatty acid oxidase inhibitor. This is known as a partial fatty acid oxidase. उसका रोल क्या है, okay. So in your heart, myocardium needs energy, and myocardium needs energy, and for that myocardium break down the lipid fatty acids by partial fatty acid oxidase enzyme, fulfills its demand. And now during the oxidation of partial fatty acid, which is not an efficient fuel, fatty acid ये efficient fuel नहीं होता है आपका, glucose efficient fuel होता है. Primarily it will take this fatty acid, fatty acid oxidation, partial fatty acid oxidation. Due to this, what happens? So there is a generation of free radicals in the at the myocardium, and that free radical will also damage myocardium more. So that's why inhibition of this partial fatty acid, okay, oxidation. So inhibition of this enzyme. So there is no your myocardium will not be able to oxidize the fatty acid, and there will be no production of your free radicals. And one more thing, so due to inhibition of this, your heart will not, your myocardium will not utilize fatty acid, so it will shift
to the glucose for energy, which is efficient source of glucose. That's why partial fatty acid oxidase inhibitor they are used. Example is trimetazidine and ranolazine. Then sodium channel blockers are there, again ranolazine, ivabradine. These are the drugs.